All right, guys, we're live. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to PSLnama at DN Sport. My name is Waqas. I'm your host. I have with me Hassan Bhai, Sohaib, and we had Gibran Bhai who disconnected like 1 second before going live. So hopefully he can rejoin us. Acha, so boys, IU versus KK. आई मीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट था. मैंने जो है वो अपनी फीलिंग्स को कंसोलिडेट करने के लिए आज वापस लाल पहन लिया है, लेकिन जो है इफ वी कैन आई मीन वी ऑल न्यू दिस वाज अबाउट टू हैपन, राइट? सो हसान भाई, आपकी टीम जीती है. आई एम गोना स्टार्ट विद यू. थॉट्स ऑन द गेम? Yeah, I think it was a bit tricky because we haven't seen such a high chase yet in the PSL. I think one of the highest chases was around the 150 mark. So when KK did get that 200 mark, तो लग ही रहा था कि they might make it difficult for Islamabad United. And props to Islamabad United, even though it was a daunting score. और कॉलिन मनरो भी काफ़ी जल्दी आउट हो गए, even though he wanted a good strike rate. But मतलब आजम खान once again showing his mantle and फहीम अशरफ उससे पहले उसको promote किया गया and then he ended up playing the helping hand. मतलब he had some good strokes too in there, but आजम खान जो है ना he likes to नज़र ये आ रहा है इस सीजन में अब कि when he's under pressure he tends to perform better. He seems to be one of those characters जो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव एज अ स्पोर्ट्समैन बिकॉज जब ज़्यादा मुश्किल इन्वायरमेंट होती है ना तो उसी वक्त स्किल का पता चलता है एक इंडिविजुअल का what might be. And then even though मतलब he took the game away, he did have good support from him and then obviously Asif to finish it the way he did. थोड़ा सा शुरू में मुश्किल हो गया था जब आरवीडी जो था वो थोड़ा सा स्लो गया. एलेक्स हेल्स ने शुरू में इतना अच्छा स्टार्ट दे दिया था कि आई मीन इस्लामाबाद वाज ऑलवेज गोना go through with it after they saw off that first spell by Ahmed. So yeah, good win in the bag and justice is served. Justice is served. All right, so I'm gonna move on to Sohaib. Sohaib, let's talk about a bit about Azam because he's now like contributed to a few wins for Islamabad, and I mean, it seems that he is absolutely ready to take up the middle order mantle for Pakistan internationals की जो limited overs international की जो team है उसके लिए. So, is he international ready? Is he somebody that we think should be like the first name on the team sheet when it comes to middle order batting? या अभी भी जो है like there is room for improvement? Thoughts? यार आजम के बारे में हमने बहुत लंबी बात करी हुई है. लास्ट टाइम जब उसने कोयटा से मैच जितवाया था तब भी हमने यही बात की थी कि वो बैटिंग वाइज तो कोई डाउट है ही नहीं. तो ये हमने हमेशा उसके फिटनेस पे बात की है कि फिटनेस वाइज जो है वो आपने फैसला करना है कि आप उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करोगे. क्या वो एज अ लुक वाइज वेट में ज्यादा है या वो वैसे फिट है या नहीं है, उसकी मूवमेंट कैसी है, फील्ड में कैसी होगी. अगर आप उसको एज अ कीपर खिलाते हो, रिजवान को फील्ड में ले आते हो तो उसका कितना इम्पैक्ट आएगा. बैटिंग वाइज तो देयर इज नेवर बीन अ डाउट about his performance and great part is कि वो पेसर्स को भी हिट कर रहा है. एंड आज का बॉलिंग अटैक ऑब्वियसली कराची का इज अ बिट अंडरवेलमिंग देखा जाए तो कंपेयर टू द अदर्स. तो इट वाज कंपैरेटिवली इजी. मतलब उसने नसीम हसनैन जैसे पेसर्स की पिटाई करी हुई है इसी सीजन. तो आज वाला जो है वो आई डोंट थिंक कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आज तो आई डोंट थिंक कि उनके एंड से मुझे दोनों इनिंग्स में कोई खास गलती या कोई मसला नजर आया है. whatever they had the resources at hand they used them well. बैटिंग ऑर्डर भी सही था, सब कुछ मतलब it was on point. एक आप अगेन वो आर्ग्यूमेंट जो चल रहा है कि कासिम अकरम प्रॉब्ली मलिक की जगह टीम में हो सकता है, उसके अलावा एवरीथिंग वाज फाइन. प्रॉब्ली मूसा खान आप अगेन आमिर यामीन की जगह आप उधर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं.
उसके अलावा आई थिंक दे डिड वेल बैटिंग में भी, पर अगेन दे वर अप अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड वाज टॉकिंग टू समवन कि दे आर 20 रन्स शॉर्ट कंसीडरिंग दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इस्लामाबाद. राइट. एक पॉइंट और ये फहीम का प्रमोशन मुझे समझ नहीं आया. I think that helped Karachi to be back in the game because उस time it was pretty evident कि spinners लग जाएंगे. तो शादाब या आजम आ जाते तो उस वक्त इमाद और तबरे शमसी ने बॉलिंग करनी थी. और फहीम के आने का मतलब ये था कि ही वाज अ बिट लेसर गुड अगेंस्ट स्पिन कंपेयर टू आजम, शादाब और इवन मुबस्सिर. तो उसमें फिर मलिक के भी 2 ओवर निकल आए के लिए, तो वहां से के को मैच में वापस आना आसान हो गया, जहां से आजम को फिर अगेन उनको निकाल के लेके आना पड़ा. तो वो प्रमोशन मेरे समझ नहीं आई. Right. Gibran bhai, I'm going to come to you and I want you to, I mean, कराची मैच हार गया, लाइक उस पे तो खैर बात करना अब काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं, थोड़ा मंडेन हो जाएगा क्योंकि जो है और सीजन इज ओवर, दो दो गेम्स रह गए हैं. अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो उनके 8 पॉइंट्स होते हैं. पिछले 5 सालों में एक दफा ऐसा हुआ है कि कोई टीम 8 पॉइंट पे क्वालिफाई की, तो द ऑड्स आर रियली स्टैक्ड अगेंस्ट देम. मेरा ये सवाल है कि पाउंड फॉर पाउंड जो पर्सनल हैं कराची किंग्स के, आई थिंक बिकॉज दे स्कोर 200 टुडे, राइट, विच मीन्स कि उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है जितनी थी उस पे खेल लिया, राइट. लेकिन आई यू स्टिल मैनेज टू कंप्लीटली चेज दैट विथ नो एक्चुअल हेडेक्स अगर देखा जाए चेस को बेसिकली? तो डू यू थिंक पाउंड फॉर पाउंड कराची का पर्सनल ही जो है वो इन कंपैरिजन टू अदर टॉप टीम्स वीक है? उनके जो ओवरसीज हैं वो पाउंड फॉर पाउंड वीक हैं कंपेयर टू अदर टीम्स? इज दैट वन ऑफ द मेजर रीजंस, या अभी भी हमें लगता है कि कराची जो है वो रिसोर्स अच्छे इस्तेमाल नहीं कर रही है? इफ यू कैन टेक दिस पॉइंट एंड जस्ट गिव अस योर थॉट्स. थैंक यू वकास. देखिए, आपने एक चीज़ कही कि उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करके अपने पोटेंशियल के मुताबिक और अपनी कैपेसिटी जितना खेला. मैं एक चीज़ कहूँगा कि उन्होंने समझे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही खेला था, ज्यादा ही खेल लिया. ज़्यादा खेला है क्योंकि एक मैंने पहले भी बात की थी, इस टीम की एक लिमिटेड कैपेसिटी है जो कि 170 तक रन्स कर सकती है. एक लिमिटेड बैटिंग लाइनअप को जो है वो कंटेन कर सकती है. इसके पास वो बॉलिंग में भी विकेट टेकिंग पावर नहीं है और बैटिंग में भी कोई ऐसा एक बैट्समैन नहीं है जो कि जिसको आप सेंचुरियन कह सकें, जो कि आपको बड़ी इनिंग कोई भी खेल कर दे. इमाद अभी तक अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, वरना इसकी भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस लाइनअप में से कोई परफॉर्म करेगा जितना इमाद कर रहा है. इमाद जितना जिस तरह से खेल रहा है, आई थिंक दैट्स फिनोमिनल. यहाँ तक भी जो पहुंचे थे, इट वाज ओनली वन मैन गेम. और अगर मैं कराची की आपने जो बात की ना, पर्सनल टू पर्सनल, यस देयर इज अ ह्यूज डिसबैलेंस. अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेले. सोहेब ने एक बात बहुत अच्छी की कि उनके एंड पे कोई मिस्टेक्स नहीं थी. मैं पॉइंट टू पॉइंट भी इसके बाद जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें थी दैट वर रियली रियली ऑन पॉइंट. लेकिन एक टीम की जो अपनी कैपेसिटी है वो मिसिंग है. देखिए, मैं अगर बड़ा क्लियर तबसरा करता हूँ विदाउट एनी बायसेस, तो आप एक बैट्समैन और एक बॉलर के साथ जो है वो पूरा मैच नहीं खेल सकते. That's true, yeah. There's only one person batting in all matches, that is Imad Wasim. Other batsmen, देखिए अब उनको थोड़े से जो है ना वो मुझे चढ़ाने पड़ेंगे और खेलना पड़ेगा, चाहे वो बेशक बाहर ही हो जाए. और बॉलर्स में भी अगर आप देखते हैं तो विकेट टेकिंग कैपेसिटी किसी बॉलर के पास नहीं है. आप चाहे एंड्रू टाई की बात करें, आप जेम्स फिलर की भी बात करना है, आपने आकिब जावेद को भी खिला के देख लिया. आमिर यामीन बहुत अच्छी शुरू में पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है सारे मैचेस में, लेकिन बात है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर नहीं. आमिर यामीन ने आपको इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाल कर दिए, आज भी उसने बड़ी विकेट निकाल कर दी है. सो आप एक बॉलर और एक बैट्समैन, एक बॉलर अगर मैं कहूँगा तो मैं मोहम्मद आमिर को ही कहूँगा कि ही इज द ओनली विकेट टेकिंग बॉलर दैट एक्चुअली गोज फॉर विकेट्स. उसके अलावा कोई बॉलर नहीं आ पाता. सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ पर्सनल. मेरे ख्याल में उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेला, बहुत चीज़ें ऑन पॉइंट थी, लेकिन आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ चाहे वो अपना बेस्ट भी दे दें, you cannot contain a batting lineup like Islamabad United. So Islamabad United. yes, absolutely. Right. Hassan bhai, I want to come to you and let's take this point forward, right? So, like 8 games later, अब हम ये चीज तबसरा कर रहे हैं कि कराची basically does not have the personnel, right?
And this now circle backs to के draft में उन्होंने क्या गलती की. Do you think after 2 seasons of completely botching the drafts, botching the season with different personnel, do you think they need to like go back to the drawing board and start from a clean slate? A backroom staff se leke the personnel who are representing them on the field. Do you think that is what's needed at KK? And like probably getting like asking Basim Bhai to take a back seat and when and let people who are actually familiar with data matchups and all these kind of things to take the lead. Do you think is that an approach that they should look forward to in PSL 9? Yeah, it's an interesting point. We touched upon it last episode as well. Okay, they do have the data guys. They do have decent people in their team. सिर्फ मसला एग्जीक्यूशन पे आ रहा है कि वो डेटा एक्चुअली यूज नहीं कर रहे and that is probably top down driven and वहाँ पे yes there seems to be a rigidness when it comes to executing their plans. लग यही रहा है कि वसीम अकरम is probably calling most of the shots and when you look at it तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने गलत की हैं जिस पर नज़र ये आता है कि स्ट्रैटेजी में मसला है मतलब हमने ये भी बात की कि स्ट्रैटेजी के अलावा व्हाट इज़ द ब्रांड दैट दे वांट टू प्ले वो भी थोड़ा सा इनको कंफ्यूजिंग लगता है एंड they're probably one of the only few teams that have not yet even figured out what is the team that what they want to play, what order do they want to play. While the rest of the teams did struggle initially, मगर conditions देख के उन्होंने adapt कर लिया वेरी क्विकली. थोड़ा सा जल्मी भी लेट हुई अपने टीम बैलेंस को अडाप्ट करने में बट अब उन्होंने भी कर लिया and which is why अब ये नज़र आ रहा है कि Quetta and Karachi the two teams who seem to be confused in what they want to do. I think next season it should be very clear draft के अंदर भी they should they have one of the good statisticians with them. They should maybe lean on them more when they're going to pick a team. और टीम पिक करने में और ड्राफ्ट करने में ना बहुत फर्क होता है. फर्क होता है exactly. You might have good players in your draft, but if you have a bunch of good players for the same position, that might not mean that you have a good team. तो नज़र यही आ रहा है कि इवन दो इमाद वसीम हैड अ फिनोमिनल सीजन बट वो वन मैन शो था फॉर कराची. ठीक है आमिर का एक आधा स्पेल था विच वाज रियली गुड. इट टर्न्ड हेड्स बट वो वाला मैच भी वो लोग हारे and we keep mentioning it कि they don't try to go towards new emerging players. थोड़ा सा इन्होंने तैयब ताहिर को longer run दिया and we saw छोटे sample size में he did well. एंड अब यही लग रहा है कि शोएब मलिक का हो सकता है लास्ट सीजन. आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग. ही हैड अ इंजरी स्केयर. उसके बाद मैंने नहीं देखा. आई मिस्ड इट कि व्हाट हैपेंड बट बेस्ट विशेस टू हिम. बट हैविंग सेड दैट आई होप कि प्रॉपर रन दिया जाए कासिम अकरम को इन द रिमेनिंग गेम्स एट लीस्ट. एंड दे हैव नथिंग टू लूज नाउ सो थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट अब खेलने की जरूरत है. All right. So, Hassan bhai, oh sorry, Sohaib, I want to come to you with this. And Hassan bhai ने काफी अच्छा break down किया इन सारी चीजों को. And I want you to expand के क्या अब हो सकता है. I mean, सीजन तो खत्म हो गया है. Is it time for Wasim Akram to like टाटा बाय बाय? आपने कर लिया 2 साल 3 साल जितने भी साल करना था आपने. Is that call is that call about to happen or is should it happen given कि क्या हुआ है पिछले 2 सीजन में? यार मेरे हिसाब से ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क करने के लिए कि आप जिस को हायर करो ना कोई भी जॉब के लिए तो आप उसको काम कर दें. तो अक्सर हमारे यहाँ होता ये है कि अगर ऊपर कोई बहुत स्ट्रांग बंदा बैठा है ना तो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी चॉइसेस या उसकी बात जो है वो हर जगह मानी जा रही होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पावरफुल पोजीशन में है वो किसी भी बंदे को अच्छे बंदे को उस काम के लिए लेके आता है तो वो उसकी सोच का या उसका काम को देख के लेके आता है लेकिन फिर उसको मजबूर करता है कि वो अपनी सोच जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट कर दे. जैसे हम ये बात कर रहे थे उस टाइम कि अस्सलाम वालेकुम खैरी भाई. उस वक्त हम ये बात कर रहे थे Carry on.
उस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि जब के ड्राफ्ट में बैठा तो बावजूद इसके कि दे गॉट द डेटा गाइज इन, उनकी ज्यादा बात, ये वकास भाई की रिपोर्ट थी कि उनकी ज्यादा बात नहीं सुनी गई। एंड वसीम नहीं भाई की सुनी कॉल, गई क्या? उनकी वसीम भाई की जो बात थी या उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने बाकी चीज को ट्रम्प किया। एक चीज और ये है कि आप शुरू में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में मैंने एक बात की थी, वो कोर प्लेयर्स ऑफ एवरी फ्रेंचाइज थी पीएसएल में ना। आप हर हर टीम की कोर प्लेयर देखोगे ना, जिसके अराउंड टीम बनती है। इस्लामाबाद का देखो, मुल्तान के देखो, हर टीम का कोर बहुत स्ट्रांग है एंड मोस्टली लोकल प्लेयर से कोर बनता है। एक आध कोई ओवरसीज प्लेयर को आप कोर में ले आते हो, लेकिन ज्यादातर लोकल प्लेयर से बनता है। जब आप के कोर देखोगे ना, तो उसमें एक बाबा था, ही इज नॉट हेयर। एंड अभी उनके कोर में दो प्लेयर हैं, एक इमाद और एक आमिर है। सही है। आमिर बीइंग द बेस्ट बॉलर, कल जिब्रान भाई ने मेंशन किया कि ही इज पास हिज पीक। तो आपका बेस्ट बॉलर है, वो अपनी पीक गुजार चुका है। एंड उसके बाद आपके कोर में देर इज इमाद वसीम, हु अगेन जिब्रान भाई हैज सेड इज परफॉर्मिंग अनएक्सपेक्टेडली। हम में से किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि रन शीट पे जो है वो दूसरे नंबर पर इमाद वसीम खड़ा होगा। एंड बॉलिंग में भी इज नॉट दैट अ गुड बॉलर, इज अ यूटिलिटी बॉलर। तो प्रॉब्ली पहली चीज ये होगी कि आपने लोकल प्लेयर्स का पूल अच्छा बनाना होगा एंड उसको फिर लेके थोड़ा, आई थिंक के विल हैव टू लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। थोड़े यंगस्टर्स को लेके आना होगा, उनके अराउंड टीम बिल्ड करनी होगी एंड देन लाइक दे विल हैव टू गिव इट एटलीस्ट 2 or 3 years टू लाइक, फिर उसके बाद वहां से आगे कहानी शुरू होगी। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम हियर। All right. So we have with us Usman Khairi with us, who joined our live stream. Welcome on board to PSLnama, Usman bhai. अच्छा, firstly थोड़ा वो can you make the phone in landscape? वो थोड़ा vertical आ रहा है, तो if you can just change the orientation. Okay. Yeah. Simple. So I don't know why it's doing it. Acha, in the meantime, while Usman bhai is doing that, I'll just touch base with Jibran bhai. Jibran bhai, KK obviously काफी बात हो गई है. Let's talk about Islamabad a bit here, right? क्योंकि Islamabad जो है like जीती है मैच, तो like we need to like give them the time के उनको भी थोड़ा प्रेस करते हैं and see के like what they did right. So I think do you see Islamabad as a title winning team right now? जो भी आपने उनका देखा है टूर्नामेंट में. देखिए, टाइटल विनिंग डिबेटेबल है, बट यस दे कैन बी इजीली इन द फाइनल्स विद द क्वालिटी ऑफ बैटिंग दे हैव. वो आराम से इनको फाइनल में लेके जा सकती है. देखिए, बैटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन व्हाट एक्चुअली कैन स्टॉप देम इज देयर बॉलिंग. बॉलिंग में ऑब्वियसली देयर आर क्लियरली सम लूप होल्स, और आप देख रहे हैं कि कराची किंग्स जैसा एक एवरेज बैटिंग सेटअप, जिसमें बीच में मैंने कल भी कहा था कि आपके दो आपके पास जो है वो एंकर्स खेल रहे हैं, अगर वो भी 200 तक पहुंच रहा है तो दैट्स वेरी अलार्मिंग फॉर अ टीम जो कि जीतने की कंटेंडर हो सकती है. बैटिंग पे अगर आप जाएंगे, डिपेंड करता है वो दिन किसका दिन होता है. कहने को इस्लामाबाद की बैटिंग जो है वो 90 रन पे भी आउट हो चुकी है. सो जिसका दिन होगा वही वही बेहतर है. लेकिन आई थिंक ये बैटिंग इनको फाइनल तक ज़रूर लेके जा सकती है, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि इनके पास जो जो एक अच्छी बात है ना, इस्लामाबाद एक जो चीज़ मिस कर रहा था अपने पूरे मिडिल ऑर्डर में, दैट वाज समवन हु कैन आजम ने आके वो स्पेस जो है ना वो कहते हैं कि फिल कर दिया. आके बीच में इनके पास आसिफ होता था और दीगर प्लेयर्स जो कि फास्ट को अच्छे खेलते थे, लेकिन बीच में एक स्पेस जो आजम ने जो फिल किया है. सो आई थिंक बैटिंग इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, और एलेक्स हिल्स के आने से मैं यही कहूँगा कि इट्स एन एक्सीलेंट बैटिंग लाइनअप. और पीछे गुरबाज अभी बैठा हुआ है, जिसको आज टीम से बाहर किया गया है. उस पर भी बहुत सारे लोगों की डिबेट है, खिलाना चाहिए था नहीं खिलाना चाहिए था, बट अगेन दे हैव अ वेरी स्ट्रांग बैटिंग. मैं कहूँगा एक सॉरी जिब्रान भाई, एक बात सिर्फ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, एंड I'd like the forum to answer on that, कि अभी सोहेब ने भी बात की कोर प्लेयर्स की. शर्जील always used to be कराची का one of the core players and they did him a little dirty this season. मतलब उसका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन्होंने शैटर किया है. एंड व्हेन वी सी इस्लामाबाद, अभी आप इस्लामाबाद की भी बात कर रहे हैं, उनके कोर उन्होंने अपने इंटैक्ट रखे हैं. तो इस शर्जील पे भी हम आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट लेवल की व्हाट वेंट यार शर्जील का मसला है. आई मीन थोड़ा टेक्निकल इसको अगर हम एंगल से ब्रेक डाउन करने जाएं कि
शर्जील इज अ वेरी, जिसे कहते हैं ना कि वो उसका वो जो एक जोन है स्कोरिंग का, विच इज फ्रॉम फाइन लेग अंटिल डीप मिड विकेट, राइट? ये उसका जो है स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि उसको ऑफ पे जो है उसके रिस्ट इस तरह के नहीं है कि वो ऑफ पे इस तरह मार सके। तो टीम्स क्या करती हैं, वो स्कोरिंग जोन उसका बंद कर देती हैं, आइदर बाय पुटिंग अ फील्डर देयर, या फिर उसको बॉल नहीं उधर फीड करते। आज भी जो आउट हुआ है शर्जील, वो बोल्ड हुआ है बेसिकली। तो उसको जब स्ट्रेट बॉल आ रहा होता है ना ऑफ के एंगल से, तो वो फंसता है वहां पे। Yeah, इन्होंने but despite that limitation, शर्जील की एक चीज, सॉरी या I'm just saying, despite that limitation, he's been their top scorer by far. मतलब रन चार्ट हाँ, देखें वो तो ऑब्वियसली और जाहिर सी बात है, काफी सीजन से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि जो क्रिकेट है वो इतनी ज्यादा साइंटिफिक हो गई है कि यू कांट रियली, जिसे कहते हैं, अगर वन डायमेंशनल प्लेयर है कोई, तो उसको टीम्स बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। देर लाइक डेटा आपको 30 सेकंड की मार होती है। डेटा आप निकालो किसी बैट्समैन का, उसके जोन्स पकड़ो और उस जोन के एकदम ऑपोजिट बॉलिंग कराओगे तो फंसेगा। अच्छा प्रॉब्लम। शर्जील, शर्जील जो है हाँ ना, उसकी एक सॉरी एक चीज और है कि शर्जील का एक तो पूरी दुनिया रीड कर चुकी है कि उसके, जैसा आपने कहा ना कि उसके जो स्कोरिंग जोन्स है वो क्या है। एक चीज और बड़ी नोट करने वाली है कि शर्जील को मुसलसल रोमान रईस आउट कर रहा है। सही है, क्योंकि रोमान इज अ स्मार्ट बॉलर, ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉलर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये दो मैचेस में भी आपने देखा कि रोमान ने किस तरह से आउट किया। आज उसने सिर्फ यॉर्कर मारी, शर्जील कुडंट प्ले इट। पिछले मैच में उसने एक स्लो बाउंसर की, वो शर्जील से नहीं खेली गई, वो उस पर भी आउट हो गया। मैं आपको एक इनिंग याद दिलाता हूँ, 2 साल पहले शर्जील ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की काफी पिटाई की थी, जैसे आई थिंक ये वही मैच होगा गालिबन जिसमें शादाब को एक चार ओवर छक्के, चार छक्के मारे थे, यस यस। उसमें जब शर्जील का कोई सोल्यूशन किसी को नहीं मिल रहा था और राणा साहब उसके वीक एरिया में, यानी कि लेग साइड पे ऊंची बाउंसर्स उनको दे रहे थे और शर्जील छक्के पे छक्के मार रहा था, उस वक्त रोमान रईस ने आके सिर्फ स्लो बाउंसर कराई थी और शर्जील कॉट बिहाइंड हो गया। सो आई थिंक इस किस्म के बैट्समैन के लिए आपको एक चालाक बॉलर चाहिए था। रोमान रईस इज दैट बॉलर जो कि आपको विदाउट एनी राइट दैट्स बेसिक सेंस कि इसको कैसे आउट करना है। रोमान रईस इज दैट बॉलर जो कि आपको अकल से और वाकई दिमाग से विकेट निकाल के देता है। राइट, ओके, आई एम गोना कम टू खैरी भाई सिंस एवरीथिंग इज नाउ सॉर्टेड, आई होप सो। तो खैरी भाई, थॉट्स ऑन द गेम फर्स्ट, एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू द शर्जील एंड केके वाला जो पॉइंट है, द फ्लोर इज योर्स, यू कैन। यार सबसे पहले तो as biased as I may sound, I'm a fan of the show, so you guys are doing a great job, all four of you. जितने भी आप लोग के व्यूज हैं, आई थिंक उस पर 50% मैंने जनरेट कर दिए, सो यू नो kudos to all of you. And I was like, yeah, I want to be part of the boys, so I just really came for you guys. And Gibran, obviously, he's the yeah, the cherry on top, so I'm glad that he's a part of the group now. So yeah, coming to this game, I just felt that Karachi Kings right from the outset, बिल्कुल competition के शुरू में, if you recall, अब पूरे में भी discuss कर रहे थे, they seemed out of it. It felt as if their bases weren't covered. तो जो हमारी apprehension थी ना, वही चीज actually materialize हो गई, because clearly their bowling looked below average, and the fact that they played guys like Ty, I mean, with all due respect, I'm sure he's probably decent or effective in the conditions that he's used to. Lekin, something data without context, I feel can sometimes also backfire spectacularly, right? So, I mean, I'm sure Australia ke andar wo acha karta hoga. I was familiar with him, to be honest. Lekin jis tarah I felt that he wasn't quite up to the mark. And his presence didn't really help Karachi Kings, So, aaj bhi agar aap dekho, 200 was, I would say, a power score on this ground. It wasn't a great score, but it wasn't a bad score by any means. Lekin the fact, I think Imad ne bhi aakhir mein bola कि अगर 5-6 बॉलें रहती हैं फिर भी chase down हो रहा है, it means clearly that their bowling resources were under a lot of pressure and just couldn't quite deliver throughout this tournament. Unfortunately for Karachi Kings, there were a couple of occasions where they could have beaten the opposition in earlier games, और वो unfortunately उनकी favor में नहीं गई. So it just sort of put a lot of pressure on them. So disappointing season for them yet again. But to be fair, we all saw it coming. I mean, जो इस team को follow करता रहा है और PSL को देखता रहा है for 2 consecutive seasons, both QG and Karachi Kings, I felt looked below par, looked undercooked, and then the results just further reinforced that. So all in all, very disappointing season from KK, especially since I know you're a hardcore fan.
And there are millions of people, because it's the biggest brand. If you recall, that the pehle idea float hua tha, Karachi King was the most expensive franchise, right? So I think they owed it to their fan base, and I think Wasim Akram, I'm a huge fan of his. In terms of his, obviously, Joe Wasim Akram ka when he was playing, his acumen and his understanding of the game, I felt was top notch. But as a coach, I feel that hasn't quite that transition. I feel hasn't been ideal. So obviously, as the coach, as someone who made those calls, I mean, he's accountable for it at the end of the day. And two disastrous seasons, I don't know, is pe Wasim Akram ki legacy obviously tarnished to hoti hai, but I don't think in the future KK want to revamp their outfit and their approach towards T20 cricket. I feel Wasim Akram may just need to step aside, and they may need to get someone new to inject or basically rejuvenate the franchise. Lahore Qalandars ka bhi, if you recall, in the first 3-4 seasons were horrible, and yet they've turned it around. So Karachi King has an example, or a team to aspire to. If Lahore Qalandars could do it, I don't see any reason why Karachi Kings cannot. But all in all, in retrospect, disappointing series for them. Right. Sohaib, I want to come to you and I want to ask you something really tricky. I mean, tricky in the sense that um, it's a difficult question, but I'll ask you. एक कोई franchise जब कोई strategy implement करती है ना, I'm saying this in a general term, right? अगर कोई franchise है, वो किसी methodology, किसी mindset के साथ कोई एक squad बनाती है, कोई अपने जो core होती है वो बनाती है, और इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? उसका आरओआई जो है वो 3-4 साल बाद आता है, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली लाइक द लॉजिक बिहाइंड इट, कि आप इन्वेस्ट करो प्लेयर में, प्लेयर आपको 2-3 साल बाद उसका रिटर्न देता है. What happens when you've made a bad call, right? And in the case of KK, it seems कि उन्होंने काफी सारी bad calls ली हैं इस मामले में. So how long should मतलब generally how long should a franchise persist with its bad call? एंड सेकेंडली, इज इट लाइक अब तो हमने वो पॉइंट डिसाइड कर लिया है कि केके का आ गया है, तो हाउ डू टीम्स अवॉइड दिस प्रॉब्लम? कैन यू, इफ यू कैन जस्ट गिव योर थॉट्स ऑन इट, क्योंकि ये एक बड़ा रिकरिंग प्रॉब्लम लग रहा है. पहले लाहौर के साथ था, अब कराची और क्वेटा के साथ हो रहा है. तो लाइक हाउ डज अ फ्रेंचाइज गेट आउट ऑफ दिस साइकिल? अच्छा, एक पॉइंट मैं दूंगा. केके और क्यूजी में एक फर्क ये है कि केके कंपैरेटिवली वेल मैनेज्ड स्ट्रैटेजीज, पर उनके पर्सनल ही उनकी कैपेसिटी, जैसे जिब्रान भाई ने मेंशन किया कि उनकी पर्सनल एज अ प्लेयर कैपेसिटी उतनी नहीं है जो उनके पास स्क्वाड है. कोयटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रैटेजिकली हार रहे हैं. उनके पर्सनल जो उनके पास है, उनकी कैपेसिटी एज इन पर्सन इंडिविजुअली प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं. लाइक दे हैव नसीम शाह, दे हैव हसनैन, दे हैव नवाज एंड इफ्तिखार. दे आर लाइक कोर पार्ट ऑफ योर नेशनल साइड. सही है. सो कोयटा के पास जो है वो रिसोर्सेज मेरे हिसाब से के से बेहतर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा बुरी है. जहां तक ये बात है कि बैट कॉल डिटरमिन करने के लिए भी पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसको कितना जो है वो चांस दिया है. जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर कासिम अकरम को ले लें, हो सकता है कासिम अकरम वुड हैव बीन अ बैड कॉल, सही है, पर उसको इतना चांस नहीं मिला ना कि आपको नजर आया कि क्या वो. यार कासिम का नाम लेके तुम मेरे दिल पे छुरियां चला रहे हो यार. अच्छा, एक चीज और भी है. द प्रॉब्लम विद केके जो मुझे लगता है कि हु इज रनिंग द शो, हु इज मेकिंग द कॉल, कि ये मतलब जैसे ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हसान भाई अक्सर बात करते हैं कि हु इज मेकिंग दैट कॉल कि कराची या कोई भी टीम ऐसे खेलेगी. जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिसाइड किया दिस इज हाउ वी आर गोना प्ले, एंड एवरी पर्सनल दैट दे गेट ऑन बोर्ड बैकरूम स्टाफ में बिलीव्स इन दैट अप्रोच. सो ये जब आप केके की बात करते हो ना, तो दे हैव वसीम अकरम. क्या आप वसीम भाई से पूछोगे, या आप मजहर अरशद से पूछोगे, या आप इमरान अहमद खान से पूछोगे, या आप इमाद वसीम से पूछोगे, या फिर आप एक नाम भूल जाते हो, योहान बोता से पूछोगे, हु इज एक्चुअली द हेड कोच ऑफ द टीम. सही है. सो जब ये 5 लोगों, आपको इन 5 लोगों में जो डिसीजन मेकर्स हैं एक ड्राफ्ट की या टीम सिलेक्शन की, उनमें जो है वो कंसेंसस नजर नहीं आ रहा, तो आपको टीम बनाने में और उसकी स्ट्रैटेजी में कंसेंसस कैसे नजर आएगा जब आपको नजर आ रहा है कि ये सारे लोग ऑन बोर्ड ही नहीं है एक ही स्ट्रैटेजी पे. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम ऑल्सो इज कि सलमान इकबाल ने लास्ट टाइम ही थ्रू द होल मैनेजमेंट अंडर द बस इन एन इंटरव्यू, सेइंग कि यार मैं तो अपने आप को दूर रखता हूँ, और ये जो हुआ वो तो मैनेजमेंट का काम है. ही शुडंट हैव सेड दैट, बट दैट्स द राइट कॉल टू डू. ही हैज अ टीम, ही हैज गॉट सम पीपल
to do the job, let them do the job. But he needs to make sure कि the people he gets on board have the similar mentality कि यार इस तरह टीम रन करनी है हमने. एक चीज यहाँ I पे think that. एक चीज यहाँ पे मैं शोएब बात करना चाहता हूँ. यू सेइंग दैट ही हैज द पीपल हु मेक दैट कॉल, राइट? बट ही इज द वन हु इज गेटिंग दैट पीपल. सो अगर इसकी वही वाली मिसाल हो गई कि इफ यू ब्रिंग लाइक अ शेफ और उससे फिर बोलो कि यार मेरी गाड़ी ठीक कर दो, लाइक मेरी गाड़ी ऑयल ड्रिप करा रही है और तुम मेरी गाड़ी जाके सही कर दो, एंड यू हैव अ शेफ, a sous chef जो ये काम नहीं कर सकता ना, you need to get a mechanic to do that, right? So if you bring in if you bring in bad personnel and if you bring in people जो modern day cricket जो है नहीं जानते या उनकी उस तरह की cricketing जो है वो नहीं है understanding, या Sky Sports didn't think it was good enough, Wasim Akram was good enough for a commentary gig, right? They like kicked him out of एक साल बाद. तो लाइक केके का वो जो है वो चला रहा है बेसिकली केके. तो दे ही गॉट रॉन्ग पीपल ऑन बोर्ड. आई थिंक अच्छा, सलमान इकबाल शुड गेट सम फ्लैग. there is another point that Wasim Akram was also with Islamabad United when they won the trophy. He was there. And ही वाज Islamabad United इसी तरह काम कर रही थी उस वक्त भी जिस तरह आज काम कर रही. वकार यूनिस वाज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड उस वक्त भी ऐसे ही रन कर रही थी जैसे आज कर रही है. Probably, क्योंकि I mean, But I think that was more that was more Dean Jones. That was more That Dean was more Jones. Dean Yes, Jones. that was more Dean Jones. Dean Jones was the guy who was, क्योंकि Dean Jones आया कराची में and they won that season. I mean, R.I.P. Dean Jones. Like we miss him. And but like the thing is कि Dean Jones was with कराची, वो सीजन वो जीतते हैं. उनकी पिक सारी अच्छी होती हैं. अरशद, उमैद, ये सारे बॉयज जितवाते हैं आपको एक सीजन. He passes away unfortunately, and Wasim Bhai gets the reins of the franchise, and like here we are. और इस्लामाबाद में भी डीन जोन्स के साथ बैक एंड उनका स्टाफ अच्छा है. आई मीन ठीक है, लाइक पीपल डोंट रेट लाइक बैकरूम स्टाफ ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनको फ्रॉड कहते हैं, बट रेहान एंड चीमा लाइक आर रियली गुड एट व्हाट दे डू. और यार लाइक मैं दीज तो मतलब रेहान और चीमा को फ्रॉड कहने वालों पे आप क्या कह सकते हैं. मतलब दे आर ग्रेट क्रिकेटिंग माइंड्स, दे हैव ग्रेट इनसाइट्स एंड एग्जैक्टली. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न गेम. पॉइंट मेरा ये था कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंसेंसस ऑफ द बैकरूम स्टाफ. जो भी आप लोगों ने इकट्ठा किया है ना, जो लोग, उनका आपस में कंसेंसस होना जरूरी है. उसके लिए आपको एक अच्छा बैकरूम स्टाफ बनाना जरूरी है जो सिमिलर सोच रखता हो. सही है. और ये बैकरूम स्टाफ की सोच भी वो डिटरमिन करता है जो उस बैकरूम स्टाफ को लीड कर रहा है. सही है. फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इनिशियली Wasim Akram being part of that leadership group, the leader was Dean Jones, and same strategy, same thing at Karachi Kings जब वो टाइटल जीते थे. I think right now that leader is Wasim Akram. So वो खिचड़ी बन गई है कि मजहर अरशद कुछ और सोचता है, वसीम अकरम किसी और तरीके से देखता है, योहान बोता किसी और तरीके से देखता है, एंड प्रॉब्ली इमाद वसीम एज अ कैप्टन उसने टीम They को लीड also, ग्राउंड में they करना. also, yeah. They also brought in Imran Ahmed Khan, who's basically working for A Sports हाँ as a हाँ consultant हाँ. for the KK. So I think वही ये बात बड़ी अच्छी है कि there is so many, like everybody is trying to give their 2 cents, और वो एंड में एक खिचड़ी पक जाती है उस चीज से जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाता है कहीं भी. That's why I would come back to Hassan bhai's point कि that first you need to decide कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, and then उस हिसाब के आप बैकरूम स्टाफ रखो और उस स्ट्रैटेजी पे चिपक जाओ कि इस तरीके से खेलने के लिए हमें किस किस्म के रिसोर्सेज की जरूरत होगी. Do और do एक बात do और जो वन मोर थिंग, बात लंबी हो रही है, सॉरी. वन मोर थिंग जो खैरी भाई ने लाहौर की बात की कि उनको 3-4 साल लगे खड़े होने में. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि कराची को टाइम लगेगा पर उनको यंगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने किया, एंड इवेंचुअली जो है वो उसके फ्रूट्स आपको नजर आएंगे. लेकिन इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा कराची किंग्स को. Right. अच्छा, I'm gonna come to जिब्रान भाई now and say कि um, काफी कराची की बात हो गई है, and let's talk about the table um, for going forward. So basically अब कराची is essentially out. उन्होंने 8 खेल लिए हैं and they haven't, and they've only won 2, तो उनके 4 points हैं. If I can just pull up the table, give me a moment. Okay, Lahore sits at with 10 points, Multan with 8, Islamabad with 8, Peshawar with 6, Karachi with 4, and Quetta with 2. But Quetta have 4 games remaining. ठीक है.
अब अगर कराची दोनों अपने जीत जाता है, दे विल बी एट 8, और अगर कोयटा अपने 3 जीत जाता है तो दे विल बी एट 8 एज वेल, राइट? सो और जलमी ऑलरेडी है 6 है। हु अब जलमी का जो है वो थोड़ा फेवरेबल हो गया है कि इज इट एक्सपेक्टेड कि वो टॉप 4 में आ जाएंगे अब गिवन के कराची couldn't finish the game today? नहीं, आई थिंक देखें, बिल्कुल अब सारी विजिबल है बात, और सारी अब बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि जो 4 टीमें हैं वो कौन सी होंगी। सो आई थिंक कराची अगर दोनों जीतता भी, तो जैसे आपने शुरू में ही बिल्कुल एक बात कही थी कि बहुत कम टीमें हैं जो 8 पॉइंट करके जो है वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाए। प्लेऑफ में पहुंच जाए, 5 साल में एक दफा हुआ है सिर्फ, या सो मेरा नहीं ख्याल कि कराची किंग्स भी आगे मूव कर पाएंगे, क्योंकि पेशावर के पास भी मैचेस पड़े हुए हैं, और ओनली टीम दैट कुड एकोमोडेट वन फ्रॉम कोयटा एंड कराची वाज पेशावर ज़ल्मी। बट आई थिंक वो जो लास्ट कराची से जो मैच जीते हैं उसके बाद पिक्चर काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि उस मैच के ऊपर काफ़ी टेबल की सूरत हर जगह डिपेंड कर रही थी। अगर वो कराची ने मैच जीत जाता तो टेबल एक बार फिर ओपन हो जाता। इस वक्त जो सिचुएशन है, आई थिंक इट्स वेरी एविडेंट कि कराची और कोयटा जो है वो रेल बी एट द बॉटम, और ये 4 ही टीमें जा रही होंगी, और उसके बाद फिर आगे हिसाब किताब चल रहा है। right. All right. So I'm gonna now come to Hassan bhai, and we're gonna talk about players from other teams, right? And then I'll go to Usman bhai as well after this. So Hassan bhai, first thing first, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट की थी जिसमें मैंने एक लाइनअप मेंशन की. I'm not sure if you saw seen that tweet, right? And I put in Babar, Haris, Fakhr, Abdullah, Azam, Imad, Rizwan, Shadab, Shaheen, Ropen, Zaman as like the people who are in form and should be like the first choice in जिसे कहते हैं our limited overs team. तो कॉन्सिक्वेंटली मेरी ट्वीट करने के बाद लोगों ने आके कोई 25 और नाम मुझे दे दिए फॉर प्लेयर्स हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग, लाइक देयर इज नसीम, देयर इज लाइक हसनैन, देयर इज नवाज, व्हाटएवर, राइट? बहुत एक लिस्ट है. We basically have a pool of 20 individuals right now that make the team one way or the other. उसमें फिर मोहम्मद वसीम भी है, फिर फहीम जो हम पीछे से लेते हुए आ रहे हैं. So like, what is the optimum solution to this problem? कि do we wait for PSL? क्योंकि अभी इस साल जो है वो वर्ल्ड कप है 50 ओवर का. तो माय क्वेश्चन है कि ये जो पीएसएल की परफॉर्मेंसेज हैं इसमें जो लड़के एहसानुल्लाह हो गया, आजम हो गया, इन बॉयज को डू यू थिंक ऑन द बेसिस ऑफ पीएसएल कि ये रेड हॉट फॉर्म में डू दे गेट अ लुक इन दैट 50 ओवर वर्ल्ड कप, और ये अभी भी आप जो है कहेंगे कि अलग फॉर्मेट्स, डोंट मेस विद इट? Yeah, to be honest, I am a big believer of not mixing formats. We often do that mistake कि based on PSL हम ODI या test team अपनी बना रहे होते हैं. And I think we should take a leaf out of the book of what England has done. मतलब उनकी almost 2 separate teams parallel में खेल रही हैं for ODIs and tests. And that is because, you know, they know what brand they need for test and ODIs and T20s. मेरा ये ख्याल है कुछ ओवरलैप हो सकता है ऑब्वियसली, बट बहुत रेयर होता है. आई मीन आई थिंक द आइडियल वे टू गो अबाउट इट इज़ कि हमारे कोइंसिडेंटली पहले T20s हैं आई थिंक अफगानिस्तान के साथ, which were originally supposed to be ODIs in an ODI World Cup year. I don't know why Najim Sethi changed it to T20 series, but he did. वहाँ पे आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, एंड देन यू प्ले न्यूजीलैंड, राइट? एंड दैट इज एन ओडीआई सीरीज एज वेल. यस. उसके बाद ओडीआई एशिया कप है. सो यू अफगानिस्तान, पहले अफगानिस्तान है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर एशिया कप है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड या करेक्ट. अफगानिस्तान के साथ T20s हैं और बाकी ODIs हैं. So what I'm trying to say is अफगानिस्तान के साथ you can try injecting new blood in the T20s based on the PSL performance, और कुछ बहुत अच्छे नाम हैं जो कर सकते हैं. Ihsanullah is one of them, Azam is one of them. I would want to see more persistence with Mohammad Haris, even though he did not have the best of PSL. He's one of those guys who can single-handedly win you a game up front. इसके अलावा और भी कुछ नेम्स हैं, but वो लंबी हो जाएगी डिस्कशन. But what I'm trying to say is कि based on that Afghanistan series,
maybe you can try one or two guys in the ODI series versus New Zealand, क्योंकि उसके बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, उसके बाद एशिया कप है, it is a global tournament of sorts, and then उसके बाद you'll be whoring on to World Cup. World Cup, right? So, uh, bowling 4 overs versus 10 overs, yeah, playing the end of 20 overs versus the 50 over format, it's a big difference. Um, I don't think Azam would be able to make the same impact जिसका भी T20s में नजर आ रहा है in the ODI setup. उसकी list A performances हैं, but they're not of the same magnitude because उसने जो अभी तक template follow किया ना player development का, जो मोइन खान ने उसके लिए template भी बनाया वो है, T20 है. वो T20 है. एंड सिमिलरली अभी तक जितना हमने देखा है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स द न्यू इमर्जिंग लॉर्ड जिस पे बात हो रही है वो T20s में परफॉर्म करें. आई नो एहसानुल्लाह का हम नाम इसलिए ले सकते हैं बिकॉज ही इज बिन परफॉर्मिंग इन द फर्स्ट क्लास सेटअप एंड द लिस्ट सेटअप एज वेल. इट्स नॉट जस्ट द T20s. उसके What पास about Sam? What about Sam? well, I think Sam. I would want to try Sam as well. I know a lot of people say that it's early for him. Magar, I think we can afford to throw him at the deep end just at a home series to try him out. And I think ODI Right. might be his better format right now. Right. Okay. So Osman bhai, I'm gonna come to you and I'm gonna carry this conversation a bit forward. और थोड़ा ना क्योंकि हम सारे यहाँ पे जो हैं we probably I mean you guys are even more experienced in watching Pakistan cricket, तो एक historic context पाकिस्तान क्रिकेट का ये हमेशा रहा है कि जब भी कोई मेगा इवेंट या 4 साल का एक वर्ल्ड कप आता है, तो जब वो 4 साल स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, जैसे हम एक वर्ल्ड कप हारते हैं बुरी तरीके से, फिर वे गोना बी लाइक रीबूट, और रीबूट के बाद रीबिल्ड होता है. वो रीबिल्ड 4 साल तक चलता रहता है, एंड राइट बिफोर लाइक एक हफ्ता पहले जिस सिलेक्शन की अगले वर्ल्ड कप के, everything falls apart. Like we don't know who our captain is, we wouldn't know who our middle order is. तो ये चीज अब क्योंकि हमारे पास PSL आ गया, and it pumps out players every year, right? And we have this pathway of like cricketers coming in through domestics into PSL, high performance और high जिसे कहते हैं ना बड़ी intense cricket खेलते हैं वो, and then they come out and जिसे कहते हैं become the limited overs players. So with people like Ehsanullah, with people like Azam, Saim, Haris coming through this machinery, do you see that same problem happening जो हम अभी मैं बता रहा हूँ, या there would be some stability in this World Cup as compared to the previous editions? I think compared to the previous eras, this is definitely a lot more, relatively speaking, a lot more stable, right? So आपका जो core है, that's still intact. So I don't really anticipate radical changes. लेकिन ये अच्छा है कि through the PSL, look, I'm a fan of the PSL because it's a great platform which allows youngsters to come and showcase what they're all about, right? And I've been really impressed by Sam. Not just because of the shots that he's played, but the fact that he's demonstrated good temperament, good technique. He comes across as someone who's very sound, who's confident, assured of his game, and I think he belongs at that level. So definitely someone that we should invest in. Also, at some point in the near future, give him those opportunities, right? Magar hockey players ki baat karo na, I'm also just going back to your previous question. I'm fundamentally opposed to format mix. Right? So, for instance, like RS, I feel is tailor-made for T20s, and we should not tinker with the approach. I mean, yes, as I say, high risk, high reward, right? I mean, he basically right from the get-go, he tries to put pressure on the bowlers by hitting over the top, and that's exactly what the Pakistan T20 team needs. I feel that the concept of anchoring is just becoming outdated, right? I mean, 5-6 years ago, maybe in T20s, uska ek role tha. Abhi bhi hai. I'm not saying it nahi hai, but the impact or the value of anchors is dissipating with the passage of time. So I feel someone like Haris is ideal for it, but can he transfer that form into ODIs? It's debatable. Reason being कि हमने tragically, I feel हमने ODIs deprioritize कर दिया है. I think one avenue where we've sort of, I feel, where our cricket's, just gone off rails is the fact we've just our focus on T20s is massively over-indexed when it comes to the other formats. I mean, if you look at the other established nations, India hai, Australia,
when it comes to their white ball cricket, but they haven't. It wasn't at the expense of their test, test match credentials. और हमने on the other hand इतना ज़्यादा T20 कर लिया कि it becomes a bit difficult कि ODIs के अंदर exactly होगा क्या, right? So I feel this year is obviously a critical one, लेकिन हमारा core अच्छा है, we have a good nucleus of players, so I'm pretty confident कि अगला World Cup है भी obviously subcontinent में, so I mean I fancy our chances. I think inshallah if we get our act together, semis is I feel like a reasonable destination for this team. I think But I Bangladesh want performed to ask you, I want to ask you this. You're saying we shouldn't format mix, and I agree, right? That's a very logical like chain for of thought. instance, I'm going to say something Yeah. slightly controversial, right? Like Babar Okay. Azam, in my ODIs, he operates at such an levels, right? If I feel he's a guy who's 10 years behind, with time I just feel he's behind that, unfortunately, that era, because if he was a player who had come up say in the early 2000s, right, or in the mid to say 2005 2007, those time per ODIs were still, I feel they took precedence over T20s, right, and you had a lot of great players still playing the game, and Babar could have really shown the world what he's all about. Unfortunately, T20s I feel isn't Babar's ideal. That doesn't make him a bad. There are other players in T20s that are far more versatile, more dynamic than Babar is. Lekin deal for him. So someone could say T20s के अंदर Babar has certain limitations. That when it comes to ODIs, I feel he is without any doubt in my mind the top two batters, right, in that particular format. I'm So gonna put T20s you. basically, if you come up with conclusions, I don't think they will transfer very well to ODIs. I'm going to put you on the spot, Khairi bhai, and I'm going to ask you this. Abhi, because we're saying we're like agreeing that format mixing nahi honi chahiye, right? But at the same time, you want to lose all that good form that Azam is displaying just because there isn't like a T. This is not a T20 year. I mean, isn't that a bit like we are being counterproductive to the resources that we have? क्योंकि आजम जो है वो like red hot form में है इस वक्त, and I think अगर उसको आप किसी भी चलो टेस्ट और रेड बॉल की बात छोड़ के अगर व्हाइट बॉल में उसको आप इंडक्ट करो तो wouldn't that be like using your resources to the best of your ability? No, definitely. Look, when it comes to Azam, I've also been a fan of his approach. I just think it's so refreshing, right? I mean, he gets a lot of criticism, but I feel it never really gets under his skin. I don't know him personally. To an outsider, he never displays that frustration or that, it doesn't come across as someone who's faced by all the criticism around his weight and fitness and whatnot. Having said that, I still feel that जो उसकी fitness levels aren't ideal, right? So for T20s, sometimes you can get away with it. लेकिन 50 overs में fielding is obviously, look, अगर रिजवान खेल रहे then Asam will be in the outfield, right? 50 overs की fitness हमने अभी तक देखी ही नहीं है because we haven't played enough ODIs, चाहे वो domestic हो, चाहे वो international हो. So it's a bit of a gamble. Having said that, look, he is in red hot form, just like Imad, by the way, which is why I would keep both of them in the squad. देखें अब bilaterals के अंदर you can always experiment, you can always give these guys a go and see how they fare, and eventually. So I'm not opposed to trying out Arkham, but to me it seems as if it may be a bit of a stretch to carry that form into the 50 over game. All Also, right. I feel. Right. Thank you, Usman bhai. So if you want to add something to this, or should I do the hashtags? अच्छा छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा. अगेन आई एम नॉट अ फैन ऑफ फॉर्मेट मिक्सिंग, पर दिस इज अ वर्ल्ड कप ईयर एंड आपको जितना मौका मिले ना लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट का, वहां आप अपने ओडीआई स्क्वाड में जितनी कमियां रह गई हैं उसको फिल करने में काम कर सकते हो. नॉट टू फॉरगेट कि आपका ओडीआई 11 जो है वो ऑलमोस्ट सेटल्ड है. 9 प्लेयर्स सेटल्ड हैं, 2 प्लेयर्स की जगह है. देयर इज फखर, इमाम, बाबर, रिजवान at the top, and there's Nawaz, Shadab, Naseem, Haris, and Shaheen at the bottom. The 2 spots you have are 5 and 6 potentially. सही है. सो वहां का आपने करना है, उस चीज को आप देखने के लिए आप T20s को भी इस्तेमाल कर सकते हो. उस स्पॉट के लिए जो आपके पास प्लेयर्स है, उसमें आगा है, उसमें खुशदिल है, एंड नाउ इमाद कैन बी इन कंटेंशन. इमाद ने प्रूव कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि इमाद जब ही टीम में आए जब आपको नवाज को ड्रॉप करना हो. सो इमाद कैन बी यूज वेयर यू वर यूजिंग प्रॉब्ली खुशदिल जब आप ओडीआई में उसको यूज कर रहे थे, या इफ्तिखार है,
इस तरह के प्लेयर्स हैं जो आप आगे T20s और ODIs हर जगह आप इस्तेमाल करके आप पोटेंशियली अपनी 11 को कॉम्पैक्ट कर सकते हो। एंड अब्दुल्ला शफीक है या और इस तरह के प्लेयर्स हैं, उनको आप या तो बैकअप या फिर वो इधर आप चांस उसको दो वो ज्यादा अच्छा खेल जाए तो प्रॉब्ली दे ब्रेक इनटू डे 11। राइट। अच्छा बॉयज, शो काफी लंबा हो गया तो हैशटैग्स कर लेते हैं पहले और उसके बाद फिर कमेंट्स ले लेते हैं। सो ओके, सो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आज हैशटैग स्क्रीन पे नहीं आ सकेंगे। सो व्हाट आई डू इज आई रीड द हैशटैग, यू गाइस कैन, you guys know where the hashtag is coming from, right? It's ask PSLnama. So there's the first hashtag, Humesh Khan writes, you guys were talking about Pakistani domestic opener batsmen players were playing in the middle order in PSL likes of Saim. I think it's fine. You guys see that the England ODI against Bangladesh were playing 11 was Salt, Roy, Malan, Will Jack, James Wiss, Moeen Ali, Butler. All are openers. काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है उमैस खान भाई की। आई थिंक हमने इसको टच किया कि हमने मेंशन किया था कि इसमें कोई मसला नहीं है। लाइक ऑस्ट्रेलिया स्टोइनिस वेट के साथ करता है, हम ये कर सकते हैं अगर दे आर प्लेयर्स जो ओपनिंग स्लॉट पे आपको अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन वाइज आपको अगर जरूरत पड़ती है कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल सकते हैं तो आप खिला सकते हैं। Yeah, because right now we have like 8 openers all in form, all gunning for 2 spots. तो हम ये कर सकते हैं, right? So Humez bhai, if you're listening to this stream, yeah, we can do that. We can try. I don't know how the lineups would look if we play 8 openers, but yeah, England agar kar raha and they're finding success, so we can do it. Hassan bhai, Gibran bhai, you want to add something or should I go to the next comment? I'd just make a very small comment. If I was a player trying to break into the team, और अगर मैं ओपनर भी हूँ ना तो मैं PSL की टीम में ना आई वुड प्ले इन दैट पोजीशन दैट आई नो वेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक वॉइड है। सो फॉर एग्जांपल मुझे अगर पता है कि मेरे नंबर 4 और 5 थोड़ा जिटरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, बट समवन लाइक सैम अयूब हु इज एन ओपनर, बट ही वुड, इफ आई वाज सैम आई वुड आस्क द कैप्टन कि मुझे एक आधा मैच में नंबर 4 5 पे जाने दें, जस्ट सो दैट आई कैन शोकेस कि आई कैन डू दिस रोल एज वेल इफ नीड बी। But this is a stretch because obviously team management भी होती है, उनकी अपने plans होते हैं. It's not just the player that takes precedence over the team. But we've seen such instances in the past जहाँ पे शान ने भी try किया मिडिल में, शादाब ने भी ऊपर आके try किया, just to prove a point कि if the Pakistan cricket team needs it, तो ये वाले roles आप display करें in the PSL matches which are closest to international level of cricket that we have domestically. Right. Acha, Jibran bhai, you want to add something or should I go to the next hashtag? नहीं नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। मैं बस एक क्वेश्चन मेरा और है, अगर आप लोग वनडे के स्क्वाड पे बात कर रहे हैं तो आई थिंक जब आप अपने टॉप ऑर्डर की मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, रिजवान की ओवरऑल पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं विद द इमर्जेंस ऑफ अदर कीपर्स इन इन द सर्किट? रिजवान की वनडे में क्या प्रेजेंस होगी, इस पे थोड़ा डिस्कशन करें। यार जिब्रान भाई, आप फुलझड़ी छोड़ के यहाँ पे गाली मुझे पड़ती है कि यार तुम लोग एजेंडा चलाते हो। आई थिंक रिजवान ने अभी पिछले जो अभी हमारी सीरीज गई है उसमें नंबर 4 तो उसने स्कोर कर दिया। जो चीज हम जो चीज उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे या उसका इंतजार कर रहे थे कि वो फाइनली नंबर 4 पे चल जाएगा, ओवरऑल रिकॉर्ड उसका पहले भी 4 पे अच्छा है, लेकिन जो चीज अगर ये सीरीज ना परफॉर्म किया होता उसने तो आई थिंक जो पलड़ा है वो सरफराज की तरफ ज्यादा झुकने लगता। ऑल्सो बिकॉज इट्स इन इंडिया, वर्ल्ड कप इज इन इंडिया और स्पिन खेलने को मिलेगा। एंड आई थिंक अभी भी लाइक T20 से बाहर ODI एंड टेस्ट में हमारे पास सरफराज से बेहतर स्पिनर खेलने वाले एक आध ही होंगे, अगर कोई होंगे। ही इज अ वेरी गुड स्पिन प्लेयर, ये बात मानने वाली है फॉर 50 ओवर एंड टेस्ट क्रिकेट। T20 की मैं बात नहीं कर रहा। सही है। सो अभी रिजवान हैज परफॉर्म्ड लाइक वेरी लेटली, तो रिजवान ही कंटिन्यू करेगा मेरे हिसाब से, अनलेस ये पूरा साल वर्ल्ड कप से पहले जो है बहुत ही कोई बुरी उसकी परफॉर्मेंस हो तो फिर शोर मचने लगेगा। एक फुलझड़ी मैं भी छोटी सी छोड़ देता हूँ। Abdullah Shafiq has a T20 century at number 4 and he's equally good with अच्छा मैं इसको टच करता हूँ, spin and pace by the way. मैं इसको टच इसलिए करता हूँ कि रिजवान के साथ फिर ये मसला है। Safi versus Abdullah was not the comparison I was expecting to brought on this show, लेकिन
चलो अच्छा, फिर इशू यहाँ आ जाता है ना कि फिर कैन रिजवान या सरफराज बैट बिलो 4, और अगर इफ दे कांट बैट बिलो 4 देन अब्दुल्ला शफीक, इफ कैन यू यूज अब्दुल्ला शफीक बिलो 4, जब आपका टॉप 4 देन सेटल हो जाएगा। फिर आप ये सोचोगे कि 5 पे अगर मैं अब्दुल्ला को खिला रहा हूँ तो क्या मुझे कोई बेहतर ऐसा प्लेयर खिलाना चाहिए जो बेहतर फिनिशर है, जैसे इफ्तिखार है या फिर प्रॉब्ली इस वक्त इमाद या खुशदिल है। तो वो सारे क्वेश्चन आने लगे। तो आई हैव अब्दुल्ला शफीक इन द स्क्वाड, पर मेरे हिसाब से अब्दुल्ला का मुकाबला इमाम से ज्यादा है। राइट, Indian idea ओके। about it. हाँ So moving on to the next hashtag, Abdul Shakur writes, does someone in the current playing 11 has a video of Wasim Akram? अब तो भाई वीडियो तो जो है हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ मालिक मकान के पास होती है, तो जो है अब केके का क्या सीन है, और मालिक मकान के पास अगर है वीडियो तो जो सर, है इसी सर शो बंद करा देंगे आप। तो इसलिए यार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो का सिर्फ मालिक मकान है। तो अब आप मालिक मकान से कुछ भी जो भी आप समझ रहे हैं वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट हैशटैग, शाहजेब शेख राइट्स, is it just me or an unusual amount of bowls to Imad this season have ended up being full tosses, many of them waist high, bowled by almost every opposition? काफी interesting observation. Shahri bhai, if you want to take this. I mean, to me, it's probably a coincidence. Really interesting observation. I don't think it's a deliberate ploy. ऐसा कुछ नहीं है. I think Imad, look, we have to give him credit. The way he's played this season, he's been phenomenal, right, with the bat. Even though he hasn't quite led his team over. I mean, there were occasions when he could have taken them over the line, and he's faltered at the last hurdle or the final hurdle. Like, by and large, his form with the bat has been exemplary. तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है. I think again, जो ODIs वाली हम बात कर रहे थे, उस context में I think his bowling remains limited. T20s के अंदर, with the new ball, he's able to sort of swing it in, and we all know that in the first couple of overs he can be a bit dicey to contend with. लेकिन जब ODIs में, when he's expected to bowl at least 6-7 overs, that is where his position against sort of becomes a bit iffy. क्योंकि Nawaz for me is definitely the better bowler. लेकिन इमाद ने जिस तरह के इस बार बैट के साथ फॉर्म शो किया है, it's been great. So maybe the opposition's trying really hard to get him out to bowl those Yorkers, and the bowlers are sort of losing their their lengths in the process and bowling him those high full tosses. But he's been, I mean, उसने जबरदस्त खेला यार, no doubt about it. ये एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी, एक चीज ऐड करूंगा कि जी जबान भाई, आई थिंक लग रहा होगा, लेकिन ये कि इमाद यॉर्कर्स को भी आपने देखा है कि वो छक्का मारता है, वो नजर आया है. शॉर्ट बॉल्स को उसने बाउंड्री की तरफ फेंका है, सिक्सेस मारे हैं, और सबसे बड़ी बात उसने इस दफा रिवर्स पे काफी स्कोर करने की कोशिश की. काफी जब से हम इमाद को फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक जब डॉलर 100 से नीचे का था ना, तब से इमाद पैडल मार रहा था, and he's finally connected at 270. Yes. So, or up to 290 हो गया यार. So, to be honest, I think, look, I have to give him full marks of perseverance. लगा रहा. Another guy जो लगा हुआ है is ट्विटर पे जा रहा है, ये स्निपेट ट्विटर पे जा रहा है कल. यार मैं भी यही सोच रहा था. लगा हुआ है. हुसैन तलब हर सीजन में मारता है, but मुझे याद नहीं आता when he last connected, So, but इंशाल्लाह वो भी 2028 में will definitely make that. यार मैं एक चीज और कहूंगा कि अब फाइनली when he's scoring, तो यार विदाउट कंडीशंस प्लीज अब तारीफ कर लो यार. मतलब उसमें अगर मुझे इमाद का ये जो है ना, जिन्होंने क्वेश्चन किया, उनको कह रहा हूँ कि अनकंडीशनली भी थोड़ी सी तारीफ कर लें, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे रिमार्क्स ये वाले पढ़े. ऑल्दो आई हेट हिम, बट आई थिंक ही डिजर्व प्लेस इन द टीम. यार खुदा का वास्ता है, अनकंडीशनल भी तारीफ कर लो, अच्छा खेल रहा है, प्लीज यार ऐसे नहीं करो.
I think I think agree. LeBron. Yeah, Sorry, not to belabor the point and not to drag this on, but I think it's also got to do with the negative remarks that these guys gave during the recent World Cup. Na? So I think even when you're out of the team, you have a certain responsibility, to buck up the boys. क्योंकि आप इन्हीं के साथ खेल रहे हो. अगर आप negative comments दोगे about the captain and the squad, then naturally उसका एक detrimental impact होता है. So अगर आप आमिर की बात करो, इमाद की बात करो, they're not the most popular or the most liked cricketers. Forget about within the cricketing fraternity, even amongst fans, and they only have themselves to blame for it. So लोग फिर भी acknowledge कर रहे हैं, despite them not liking these individuals, they're still saying that okay, Amir bowled well and Imad played exceptionally well with the bat. So to be fair, they need to be careful about the kind of things that they say in the media. यार आई right. थिंक मैं अच्छा, एक चीज पहले बहुत बात हो चुकी है इस पे, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली भी एक चीज़ कहूँगा कि एक चीज़ बिल्ड करना भी होती है, नैरेटिव ना बिल्ड की जाते हैं बड़े स्ट्रांगली. आमिर का जिस तरह से मिस कोट, मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा, मिस कोट की गई कि टेल एंडर वाली चीज़, उस पर ओवरऑल नैरेटिव बिल्ड किया गया. अब जैसी वो आउट हो तो उसके बाद पेशावर जलमी ने भी पोस्ट डाली टेल एंडर के ऊपर, लोगों ने भी, चूंकि ऑब्वियसली लोग अपना नैरेटिव फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से जो है आपकी कमेंट्स मोल्ड करते हैं. अच्छा, एक लाइटर नोट. मादर आमिर बहुत सारे कमेंट्स जो है वो मोल्ड किए गए थे नैरेटिव के अकॉर्डिंगली. सो आई डोंट थिंक दे रियली मेड एनी नेगेटिव कमेंट्स. हो सकते हैं कुछ का मैं मार्जिन दूंगा, अगर किसी का गलती, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और कोई ना कोई बिला वजह कोई कड़वा नहीं बोलेगा. So थोड़ा सा margin But I think that's a fair thing. But let me just ask you this: do you think it was fair? I mean, to drop Amir given the form that he was in at that point in time, and similarly Imad, क्योंकि नवाज ने अपनी place को I feel justify किया, right? Yes. So I don't think it was unfair for those two guys to be on the sidelines either. नहीं, अच्छा, मैं Yeah. एक चीज बस इस पॉइंट को बस इमाद के उससे रिवर्स स्वीप से जो है ये बात निकली थी. तो ऑन अ लाइटर नोट बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इमाद का जब अब रिवर्स स्वीप कनेक्ट होता है ना, तो मुझे 2013 की एक चीज याद आ जाती है, जब आफरीदी ने रायन मैक्लेरन को छक्का मारा था, उसके ऊपर वैंडरर्स की छत के ऊपर मारा था, और गोल्फ कोर्स में चली गई थी. एंड I don't know who was in the commentary box, but his words were, Afridi has been swinging for 2 years now and he's finally connected one. इमाद के साथ वही हुआ है. एंड आई थिंक ये डिस्कशन जो जिब्रान भाई और उस्मान भाई की हो रही है, आई थिंक दैट्स अ शो इन इटसेल्फ यार. लाइक ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स इंटरट्वाइंड डिस्कशन है. तो आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैशटैग एंड आई आस्क सान भाई टू टेक दिस because it's for Islamabad United. Omar Iqbal writes, Islamabad winning is fine, but Shadab captaincy is still below par, considering he's vice captain of national team. Discuss on show. Hassan bhai, if you can very quickly describe क्या-क्या गलतियां किया Shadab ने उसमें. I think Shadab की जो captaincy ना, it's coming under scrutiny a little unjustly, because Islamabad United जो है ना, they still made good matches out of difficult situations thanks to a good bunch of personnel, but also the captaincy. और उसमें ना more often than not, they were also a couple of times chasing, and नजर ये आया कि chase करते हुए teams are finding it more difficult, and जो batting first होती हैं they end up more often than not winning the matches. तो इसलिए वो कुछ situations भी ऐसी थी, but I think captaincy में इतना बड़ा issue नहीं है. एक तो बैटिंग ऑर्डर्स के ऊपर इनिशियली कुछ हिकअप्स हुए थे, बट देन दे गॉट दैट राइट नाउ दे सीम मोर सेटल्ड. ऑलराइट यार, बहुत कमेंट्स हैं, मैं अभी कमेंट देखा हूँ, 1 लाख कमेंट आए हैं, राइट. सो आई जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू देम. स्टम्प्स डाउन मोराल टू राइट्स, जनता है कि वो ना आएंगे, फिर भी मसरूफ इंतजार है दिल. जानता है कि वो ना आएंगे, फिर भी मसरूफ इंतजार है दिल. वो से शेर की मुराद कासिम अकरम है, वो से शायर की मुराद कासिम अकरम. जानता है कि वो ना आएंगे, फिर भी यार ये वकास को पढ़ने दो. Here for this. वकास को पढ़ने दो. हाँ चलें यार, वो रोमन उर्दू में लिखा था, मैंने उर्दू. हाँ वो प्रॉपर उर्दू होता ना, तो आई वुड हैव लेट हिम रीड इट.
अब उर्दू का कोई कमेंट नहीं आएगा बेटा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अच्छा, मेहरान खान राइट्स भाई उर्दू में, आई डोंट नो व्हाट ही इज रेफरिंग टू बट लाइक उर्दू में ही हो रहा है आई थिंक ना। हमारी, हाँ, हम लोग असल में Talk about the स्विच conversation. कर, हाँ हम स्विच कर जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली हर किसी को वो नहीं होती, विच इज फाइन। ऑलराइट। अफजाल अहमद राइट, सुना है रिजवान रूल्ड आउट, व्हाट इज दिस? Ruled out of that. आई हैवंट I think हर्ड he's saying एनी saying सच Rizwan न्यूज़। ruled out, but there's no such thing. I have not heard any news. Okay, moving on. कोई ऐसी Raja खबर नहीं। Nasir writes, Sir, our whole इमाद वसीम को कैसे देखता हो? क्या अभी भी क्या लिखते हैं लोग यार? I have no idea. Can somebody please read this for me? Hassan, you give it a Uh, shot, man. I'm I, cracking up और पढ़े. आई थिंक इसको प्रॉब्ली वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते सर। आप इमाद वसीम को कैसे देखते हो? क्या अब भी पीसीबी गौर नहीं करेगा इस पर? सो वी टॉक्ड अबाउट इमाद एंड हिज, I think we've touched about हाँ, Imad like a lot. Like अच्छा, वो वन पॉइंट अबाउट इमाद इज कि आज मुझे लगा कि वो स्पिन को सिंगल डबल की कोशिश कर रहा है एंड पेस क्विट कर रहा है, एंड वो आखिर में स्टैट से भी नजर आया कि उसने 16 बॉलों पे 11 रन बनाए स्पिन के अगेंस्ट और 38 बॉल्स पे 81 बनाए पेस के अगेंस्ट। सो मतलब उसने पेस को ही टारगेट किया आज, व्हिच वाज लाइक गुड टू सी। I think historically, Imad against pace has always been pretty. I mean, he's always looked comfortable against pace. उसका issue हाँ leg spin के खिलाफ usually होता था. I remember हाँ वो जब अफगानिस्तान वाली जो innings उसने खेली थी, that was हाँ one of his best knocks. But हाँ, he was all at sea against Rashid that day. राशिद खान, लेकिन यस। फिर obviously capitalized against the Pacers. So look, I mean, and I as think हमने already ये बात कर ली कि इमाद अच्छा खेल रहा है, and I think there is room to keep him in the. I feel it wouldn't be off to keep him in the squad. one आई of the थिंक नॉट, major adjustments that he's made is कि अब वो बॉल को ना लेट खेलता है, like he doesn't commit to the shot when the bowler is bowling. पहले वो गलती ये करता था कि वो कमिट कर जाता था कि उसने क्या खेलना है and then he would Yeah, watch it. he yeah, he also gave a very interesting comment. Somebody asked him at the start of the season, कि what happened? How did you turn around your pace hitting? हालांकि historically, you were renowned to not be so good versus pace. और उसने admit किया कि यार मैं ना डरता था पहले, and he made a link to UFC. He said मैंने UFC देखा और मैंने देखा कि these guys are taking such body blows, तो ये तो फिर भी बॉल है. So if they can take that, तो फिर the अच्छा, action hit was there was Anderson, for motivation वो there, एंडरसन सिल्वा की डीवीडी लगाता है उसके बाद। there was सीरीज इन इंग्लैंड पाकिस्तान जब गया था, आई थिंक बहुत ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई थी हमारी 4-1 से। उस सीरीज में भी समहाउ हम 250 कर जाते थे हर मैच में, उसमें इमाद ही अच्छा खेल रहा था। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां आपको इधर उधर इमाद की जो है वो बैटिंग नजर आई है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल जरूर है, जो कि अब खुल के बिल्कुल इस सीजन सामने आई, व्हिच इज वेरी गुड इमाद का जो टू सी। इमाद की जो फर्स्ट एवर इम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी, आई रिमेम्बर वेरी वेल, वाज Sri अगेंस्ट Lanka. श्रीलंका, जो उसने श्रीलंका या दैट सपना, वाज यार लास्ट बॉल उस 6 मारा पॉइंट पे, या लास्ट बॉल जो 6 मारा था उस पॉइंट पे ही शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज समबडी हु इज काम अंडर प्रेशर, और उस पे काम करना यस। चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये सब नहीं होता है, तो आई थिंक क्या इमाद को उसके बाद थोड़ी सी इंजरी हुई थी उस मैच या उस सीजन में, उसके बाद वो थोड़े अरसे टीम से बाहर रहा था। एंड देयर वाज वंस जब शादाब आई थिंक कैप्टन था नॉर्दर्न का, शादाब, नवाज एंड इमाद ऑल थ्री प्लेड फॉर नॉर्दर्न्स इन द सेम 11, सो आई लाइक दैट आइडिया लॉट बिकॉज शादाब कैप्टन था, ही यूज्ड टू Correct. यूज प्लेयर्स फ्लोटर्स ये वो, तो बहुत अच्छा राइट। जो है वो उसने यूज किया था तीनों को एक ही टीम में। Okay, so moving on to the next comment. M Danish writes, आजम खान को स्लो बॉल्स क्यों नहीं किया? Hmm. किए थे सर, वो हर स्लो हम्म, फास्ट पे एक सबको और मार किया रहा था। आजम के लिए एक चीज और किए थे कहूंगा सर। कि देखिए बाकी बॉलर्स को तो मैं कहूँगा जैसे आमिर यामीन हो गए, बाकी एंड्रू टाई हो गए, उन्होंने बहुत लूज बॉल्स दी थी। मेरे ख्याल में जो आजम के केस में असल जो प्रॉब्लम हुई है ना वो तबरेज शमसी की तरफ से हुई है। Correct. बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन हाँ एक चीज आप नोट कीजिएगा कि अगर आप लेफ्ट हैंडर होते हुए लेग से बॉल कर रहे हो
और उसके बाद आप बॉल भी लेग पे ही घुमा रहे हो, तो बहुत चांसेस है कि बैट्समैन उसको फाइन लेग की तरफ ही खेलेगा। आजम उसको मारता रहा, उसने अपनी साइड चेंज करके उसको ऑफ पे बॉल करने की या गुगली देने की कोशिश नहीं की, वो उसकी लेग पे ही बॉल देता रहा और वहां से आजम उसको स्वीप करके फेंकता रहा। आई थिंक दैट वाज द और बिगेस्ट मिस्टेक, शायद किसी ने इन्फॉर्म किया ना, उसने खुद अपनी साइड चेंज की, वो एक ही जगह उसको बॉल करता रहा और वो फेंकता रहा। आई थिंक दैट्स वेयर दे वेंट रॉन्ग विद आजम खान। okay. All right. So moving on to the next comment, Adil Nisar writes, KK will play a 41 years old to then to develop a 20-year all-rounder for themselves and PCT. यार सर आदिल भाई, the problem is कि ठीक है, like development होती है players की, but KK are not liable to, जिसे कहते हैं, हाँ produce a player, क्योंकि they are a franchise. But yeah, the point is कि अगर वो उस youngster को खिला देना, सिर्फ वो खिला दे, डेवलपमेंट छोड़ो, वो तो बात की बात है, सिर्फ खिला दे तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वो रन बना लेगा, कुछ फील्डिंग अच्छी कर लेगा, आउट कर लेगा। तो द द पार्ट दैट के वो दे आर मिसिंग आउट ऑन अ यंग प्लेयर इज नॉट बिकॉज कि वो डेवलप नहीं हो पा रहा, इट्स जस्ट के उसको अगर वो खिला लें तो वो जीत जाएंगे मैच। तो मूविंग ऑन, तनवीर अहमद राइट्स, अब आई डोंट नो if this commenter is the guy who I think he is, but we'll take the comment. I don't think so. I hope not. I 203 अगर इतना चेज बाबर ना कर पाया होगा, सब यूट्यूब वाली प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, कर रही होगी, कहाँ है वो? Yeah, Waqas, your struggles to read Roman English or Roman Urdu are just legendary, man. this this is this is आज इसकी लास्ट में खराब है। आज This is a हम piece कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि अगर बाबर कैप्टन होता और दूसरी टीम 203 चेस कर लेती तो बड़ी क्रिटिसिज्म होती। आई थिंक वो ये कहना चाह रहा है। okay. एंड हाँ, आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक बाबर पर आई फील कुछ ज्यादा ही आजकल क्रिटिसिज्म होती है। जैसा मैंने पहले कहा, T20s के अंदर सर्टेन लिमिटेशंस हैं, बट वो बड़े प्लेयर्स की होती हैं यार। मतलब वो स्टीवन स्मिथ की भी आप कह सकते हैं, वो तो काफी मतलब टॉप प्लेयर्स की होती है, लेकिन आई जस्ट फील ही गेट्स सिंगल्ड आउट एंड ही गेट्स क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। सो यू नो, पीपल नीड टू टोन इट डाउन। All right. Saad Zahid writes, off topic, but Hassan has an uncanny resemblance to Shamsi. Oh, Hassan is a uncanny. यार हसान भाई ये बताओ, आप आजम खान को साइड चेंज करके बॉल क्यों नहीं कर रहे थे? यार, this is basically indication कि this show now has super fans. क्योंकि अगर कोई वैसे you know, I did ball leg spin in my playing days, so yeah, as close as it gets. But I'll try to take it as a Yeah. compliment, obviously. All right. Okay. So Fatma writes, Imad said Babar played for personal milestones, and now see all Imad innings came in losing cause, and even Amr celebrated his losing spell with a cake. I think um यार ये चीज सिर्फ वही हो जाएगी कि अगर हम यहाँ पे चीज की बात करेंगे, तो वो नैरेटिव बिल्डिंग वाली एक जो जिब्रान भाई ने की थी कि एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, अब देखो ओ देयर लूजिंग। तो they should be criticized for losing and for not performing to how the fans expected them to perform. उन्होंने मीडिया में क्या बोला क्या नहीं बोला, आई थिंक मिसकोटिंग हुई, अगर एनिमोसिटी मैं थी तो थी, बट लाइक मैं इसका सिर्फ एक जवाब दूंगा कि इमाद ने ऐसा बोला ही नहीं है, मतलब कि बाबर प्लेड फॉर पर्सनल माइलस्टोन्स। तो मतलब एक सिंगल आउट करके बाबर को तो उसने बोला ही नहीं है। एंड देन अब अगर मतलब इस पॉइंट पर हम चले भी जाए तो बाय नो मीन्स इमाद की कोई भी जो है वो इनिंग्स पर्सनल माइलस्टोन के लिए अपनी या सेल्फिश कहीं नजर आ रही है। प्लेइंग मैग्निफिसेंट क्रिकेट। और इस सब को साइड पे रखे इमाद को, एज जिब्रान भाई सेड, आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि उसकी बैटिंग अच्छी जा रही है। जस्ट लीव दीस थिंग्स बिहाइंड यार, आगे बढ़ते हैं। यार आई थिंक इनका मेरा ख्याल में इस किस्म के मैं बहुत कंट्रोल करके कहूँगा कि इतने फालतू कमेंट्स के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए।
मेरे ख्याल में डोरेमोन देखे तो बेहतर है, क्रिकेट ना देखिए प्लीज। लेकिन एक चीज और जरूर कहूंगा कि कल एक बड़ी डिबेट हुई आमिर के ऊपर, तस्वीरें बड़ी वो हुई, एक जो नैरेटिव बिल्डिंग आपकी टीम है सबने शेयर किया, देखिए जी ही सेलिब्रेटिंग हिज पर्सनल माइलस्टोन्स, पर्सनल माइलस्टोन मर्चेंट वगैरह। यार वो बेचारा एक गरीब सा फैन है Correct. मोहम्मद आमिर का। He brought it. बासित भाई है वो, बासित बेचारा उसके पास केक लेके, उसने बासित ने अपने ट्विटर पे जो है वो तस्वीर डाल दी। सो उसमें लोगों ने बहुत हंगामा मचाया। ऑब्वियसली पीपल आर रेडी व्हेन दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स अपीयर, और नैरेटिव पहले से, चूंकि एक टेम्पलेट क्रिटिसिज्म हमारा पहले से बना हुआ होता है, तो वो लोग उस पर शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी रिसर्च कर लें, उसके बाद फिर फालतू बातें करें। Right, moving on. It's Blow like to glow. it's like me it's like me going to Safraz Ahmed's house with a cake. मतलब I'm a huge fan of his. So, Blow to मतलब glow, मैं ये right? नहीं करूँगा, गालियाँ सैफी भाई को पड़ेंगी. Blow to glow, by the way, very, very good username. I heard interview of Ali Tareen on Relu Katte YouTube channel. He was saying he going to buy and add other team in PSL. Other team in PSL team will start from SS, PSLnama. I don't know what that Ask means. PSL now. Ask I think PSLnama. I think what he's trying to say is that another team will be added in PSL, and I think we spoke about this. I think in 2025 तक नहीं हो सकता. 2025 तक नहीं हो सकता ना, साइकिल कंप्लीट होगा उसका. Yeah, even if yes, I someone's willing to do it. कोई लिख रहा है नदीम वर्ल्ड राइट्स क्रिकेट के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है, 200 कंट्री में रिलीज होगी, वर्ल्ड में हराम है, इस्लाम में क्रिकेट. ठीक है जी. सर आप हकीकत टीवी पे जाके ये मंजन बेचे. यार मैंने पर मैंने कल कमेंट किया था एक पोस्ट पे, ये क्रिकेट गेम हराम था जब कोयटा हारी थी, तो प्रॉब्ली भाई कराची के फैन होंगे. और मे बी a sad recipe for Farjad. Farjad Khan writes, few years back we were struggling to find a good wicketkeeper batsman while other ICC teams have couple of them in their playing squad. Now we have many options thanks to PSL. What's your intake on setting these wicket keepers in your squad across three formats? Ask PSLnama. काफी अच्छा सवाल है. इसमें मैं एक चीज जबरदस्त कहूँगा, सवाल है, to be honest. you've seen the likes of Bairstow and Butler play together. So if you feel that you come to a level जहाँ पे आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन इस लेवल के हैं कि they can make the team on batting alone, I think वो ना एक क्लीशे माइंडसेट से अब निकल जाना चाहिए, and we can go with और एक और पॉइंट आया था, I hear people saying this कि if Azam comes in the team तो वो आउटफील्ड में एक्सपोज हो जाएगा. I think Azam, if he comes into the team, he can add more value as a keeper because Rizwan is a better outfielder. रिजवान आउटफील्डिंग काफ़ी अच्छी कर लेता है, एंड उसने इनिशियली जब वो आया भी था, आई थिंक आउटफील्डर उसने की भी थी एज अ कीपर स्ट्रेट अवे. इवन हारिस एज वेल. हारिस भी. Correct. हारिस लास्ट ईयर टुक अ रियली अमेजिंग कैच इन द आउटफील्ड, मुझे याद आ गया नाउ दैट यू मेंशन इट, जिसमें अनदर प्लेयर ड्रॉप्ड इट इन द आउटफील्ड और उसने वो कैच पकड़ा, एंड इट वाज लाइक माइन्यूट क्विक रिफ्लेक्सेस जो वो उसने वहां पे आज हसन अली के कैच की बात ही नहीं आ जाती. सॉरी, एक और मैं पॉइंट ऐड कर लूं प्लीज बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर पॉइंट. जो अभी विकेट कीपर की बात हो रही है, इतने मल्टीपल ऑप्शंस की बात हो रही है, और हम लोगों ने बात भी है कि वनडे टीम में किन किन प्लेयर्स को होना चाहिए. ऑब्वियसली वर्ल्ड कप ईयर है, हमारे पास वनडे में इतने मैचेस ही नहीं होते कि हम अपना नया स्क्वाड टेस्ट कर सकें, नया कीपर टेस्ट कर सकें. आई थिंक शफकत अभी है नहीं, लेकिन शफकत एक बात बार बार कहता है, वो मैं रिपीट करूंगा, द नीड ऑफ ए टीम मैचेस एंड टूर्स. That's a very strong point. I think वर्ल्ड कप से पहले we should have more and more A team मैचेस जहाँ पे हम हारिस, हसीबुल्ला, इन सबको जो है वनडे में टेस्ट कर सके और इनको जो है वो टूर्स से भेज के मुख्तलिफ कंडीशन में खिला के देख सके. आई थिंक दैट इज द ओनली वे, क्योंकि हमारे पास इतने वनडेज नहीं होंगे कि हम रिजवान को बिठा के नए कीपर पे एक्सपेरिमेंट कर सकें. Right. Okay, guys. Last question. Last comment of the evening. Blow to glow. I love that username. Blow to glow भाई जो है वो लिखते हैं हैरी ब्रूक join PS baseball team in US.
to improve his power hitting. What your take on this, Hmm. guys? I think baseball is making its way into cricket slowly as a prerequisite for hitters जो lower order hitters होते हैं उनके skills repertoire में addition के लिए they do take baseball training, and I think a few baseball coaches have also featured in like uh, as support staff for PSL franchises, if I'm not mistaken I about think this Correct. information. Multan के साथ, I think, if I'm not wrong. मुल्तान के साथ, Actually, yeah पता yeah. है 1999 में पाकिस्तान का एक कोच था रिचर्ड पाइबस, जिसको वसीम Yes. अकरम ही लेकर आया था। रिचर्ड पाइबस एक्चुअली उस टाइम पे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बीबीसी एक हमारी क्रिकेट टीम को फॉलो कर रहा था, तो उस टाइम पे रजाक के साथ रिचर्ड पाइबस यूज्ड टू बेसिकली गेट हिम टू प्रैक्टिस विद अ बेसबॉल बैट। So this isn't even something recent. I know अब ज़्यादा उसकी एक वो आ रही है। I think cricket as a sport can learn from other sports, and naturally वो होगा, and baseball is very close to cricket in a lot of ways. लेकिन someone like Richard Pybus was a revolutionary, अगर आप इस context में देखें, क्योंकि मुझे याद है वो 99 में भी baseball bat के साथ रजाक को practice करवा रहा होता था। यार एक रिचर्ड स्पाइबस की एक बस चीज बताऊं, I absolutely was fascinated by the musical chairs that Richard Pybus and Javed Miandad played in that era for the coaching role. क्योंकि that was the highlight of that era. Yeah, वैसे एक सीरीज वो आता था, एक सीरीज ये आता था. एक और चीज that I want to expand upon. This is an interesting concept that you're trying other sports to improve your power hitting game. Baseball is one of them. Baseball is actually the perfect sport to improve power hitting. But एक और sport है which we've seen people do. Kevin Peterson ने golf खेलना शुरू की थी, and his swing and his power hitting actually improved after playing golf. And I've seen our current lot trying their hand at golf as well. Hafiz भाई Hafiz is a prime example, yeah. हाँ, Hafiz भाई ने किया था। Speaking of other sports, 2007 के फाइनल में गिलक्रिस्ट ने जब सेंचुरी की थी श्रीलंका के खिलाफ, he had a golf ball, a squash ball in his glove. So he was batting with the squash ball in his gloves when he made that century, by the way. और तुम note करना, after he smashed the century, he pointed to his glove as well to his management. अच्छा, एक और टेक्निकलिटी यहाँ पे बड़ी अच्छी होती है. ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी लाइक दे अडॉप्ट दीज थिंग्स वेरी वेल. अभी जो 2021 के जो T20 हमने इंडिया के खिलाफ खेला था, उसमें रिजवान स्कोर्ड वेरी हेवीली अगेंस्ट इंडिया, वो जो यूएई में हुआ था. एंड बिफोर द गेम हेडॉस बेसिकली केम, मैथ्यू हेडन की बात हो रही है यहाँ पे, केम टू हिम एंड सेड कि तुम 15 मिनट 15-20 मिनट्स उस पिच के साथ खड़े होके just visualize के how या shadow batting करो और visualize के how you gonna hit these ballers. और उसने वो 15-20 मिनट की, and then there was like I think Star Sports था किसने एक split ICC का हैंडल था, उन्होंने split screen बनाया था. He hit exactly those shots. तो सारे शॉट्स सारे एग्जीक्यूट. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट के आपकी वो जो मसल मेमोरी होती है कि आप ऐसे खेलोगे, तो वो जब आपके इतना इंटरेस्टिंगली आ जाता है जहन और हाथ पैर के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिक शॉट लगता है, जिसकी वजह से बेसबॉल और गोल्फ आई थिंक improves that aspect of the game. Correct. अच्छा guys, I think that is incredible footage, क्योंकि पहली बार आपने ऐसा देखा कि he's actually visualizing and rehearsing those shots. Yeah. And 6 hours later, he executed it to perfection. So it's one of my all-time favorite videos, यार. It was an amazing video. अच्छा guys, जल्दी से कर लेते हैं वो prediction. So tomorrow at 7 p.m. We'll be having Lahore Qalandars versus Multan Sultans. Those two teams are the table toppers. So, and this is gonna be played at I think Lahore, Gaddafi. So, very quickly, Sohaib, your predictions, Lahore or Multan? I'm gonna go with Lahore. Hassan bhai? Yeah, I'm also slightly tilting towards Lahore because recently they've been on red hot form, but I still think toss would be an important factor in Lahore. So, Right, Jibran bhai? यार for the first time it's 50-50 for me. मैं इससे पहले तक मैं मुल्तान को बहुत हाईली रेट कर रहा था, बट लाहौर हैज रीच्ड टू अ पॉइंट
जहाँ पे स्क्वाड उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया। जब मैंने कल भी ये बात की थी, उन्होंने अपने Right. जो पॉइंट्स को फिल कर दिए, तो आई थिंक दैट्स 50-50 फॉर मी। मैं लिटरली इसमें कोई इसको कमेंट नहीं करूँगा। But if I put you on the spot and ask you to take one name, who's gonna be? लाहौर कलंदर्स easily. Lahore Gandhas. Khairi bhai, So that momentum they are Lahore, carrying, yes, Lahore, 100%. It's Lahore or 4 out of Multan? 4 for Lahore Qalandars. It's 4 out of 4. Yeah, I would put my neck out here and say ke like Multan would like. Oh, Multan is the only team that has the capacity to stop the Lahore Qalandar juggernaut, and I think they're gonna do it tomorrow. Yeah, I just So feel yeah, the Lahore ki bowling lineup hai na. I mean, that is just incredible. I mean, of all the T20 teams across the entire T20 ecosystem, right? I just feel कि उनकी bowling lineup is for me the best. The best lineup. So naturally, I just feel कि वो जैसा भी उनको score मिलेगा, that bowling has the potential to restrict the opposition. So and plus they're in great form. So I fully back Shaheen, and his boys to trump over Multan. all right, guys. So PSL Nama mein there are four of PSL Nama panelists are saying Lahore. I'm the only guy saying Multan. So let's see what happens tomorrow. And I guess that will be it for today's show. Thank you everyone for joining. Thank you to our audience. Thank you to our panelists Hassan Bhai, Sohaib, Waqas, can I Gibran, just say and one thing? The sure, the sure. the loser in this, I mean, जो अपने predictions जो किए ना, the loser has to read Urdu live tomorrow in the next session. Okay. Bhai, we don't condone any betting on this platform. So Which is a जो bit है ironic क्योंकि हमारी आधी teams तो betting syndicates सब sponsor हो गई हैं PSL के अंदर. अब that's also true. That's also true. On that note, guys, I think this is the show for us. Thank you to all our panelists. We hope that everybody joins tomorrow as well, because tomorrow is a very high, जिसे कहते हैं, high intensity game between table toppers. So yeah, see you guys tomorrow. Until then, it's Allah Hafiz from PSL Nama. Have a great evening. That'll Thank be you all. guys. Take care. Allah Hafiz. Love is. Love is